Students, we have thoroughly discussed the chapter number 4, Hazrat Asma and its related grammatical topic like abstract noun and preposition. Now let's move towards the exercise related to this exercise. And the first question of this exercise is difficult words. Let's discuss the difficult words mentioned at the end of your chapter of this book. The first word is perilous. The word means something which is dangerous, or when we fraught with danger, hazardous, risky, or something which is unsafe. The second word is venture. Venture means dangerous journey और risky journey. वो खतरनाक रास्ता या जहाँ पे खतरा हो, जहाँ पे आपको अपनी जान का रिस्क हो, उस सफ़र को हम venture कहते हैं. Then we have furiously. Furiously mean with extreme anger, और जब हम extreme emotion show कर रहे होते हैं उस वक्त हम उसको furious कहते हैं. Then we have refuge. Refuge mean place of safety, shelter or protection. Then we have instantly. Instantly यानी यकदम, immediately या at once. Then we have constant. Constant mean something which happen on the regular basis or continual or persistent. Then we have detect. Detect mean किसी चीज़ को find out करना, discover करना या uncover करना. Ripe. Ripe mean mature, ready, फुल ग्रोन. राइप अक्सर फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है जब वो फुल ग्रोन होते हैं यानी कि पक चुके होते हैं, उस वक्त उनको राइप कहा जाता है. एंड द लास्ट इज रिवील. रिवील मतलब किसी छुपी या पोशीदा चीज़ को शो करना, डिस्क्लोज करना या किसी को बताना. सो स्टूडेंट, दीज फॉर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स विच वी हैव डन विद एक्सप्लेनेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वर्ड्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंप्रीहेंशन क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट.